Achiever Scam presents the Hindu vocabulary of 12th August. So let's understand the very first word for today. Transgression. Transgression is a noun which means an act that goes against a law, rule or code of conduct. An offense ऐसी कोई चीज जो लॉ या रूल के अगेंस्ट हो या ऑफेंसिव हो, आप उसको ट्रांसग्रेशन कहते हो. Let's understand it through a sentence. They will be punished for any transgressions. अगर वो कोई भी रूल तोड़ते हैं या ऑफेंसिव एक्ट करते हैं तो उसके लिए उनको पनिशमेंट मिलेगी. Now the next word is dispel. Dispel is a verb which means make a doubt, feeling or belief disappear. है ना, आपको मतलब जो भी डाउट है या फीलिंग है या जो भी बिलीव है आपके अंदर, आप उसको दूर कर रहे हो अपने से, आप उसको डिस्पेल कहते हो. राइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड थ्रू अ सेंटेंस. I want to dispel the misconception that nobody can perform well in this quiz. मैं इस मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहता हूँ कि कोई भी इस क्विज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता. Right, I hope the word is clear. Next word is paucity. Paucity is a noun which means the presence of something only in small or insufficient quantity or amount. In a simple language, किसी भी चीज़ की कमी होना जो adequate amount में आपके पास present नहीं है, आप उसको paucity कहते हो. Let's understand it through a sentence. The paucity of food was caused by the flood. Flood की वजह से वहाँ पर खाने की कमी हो गई थी, है ना. The paucity of food defines what? कमी, food का inadequate food वहाँ पर present होना. I hope the word is clear. Now the next word is conclave. Conclave is a noun which means a private meeting. Generally जब भी conclave दिमाग में आता है तो हमें confusion हो जाती है with the middle part, है ना. But conclave when used as a noun, it means a private meeting, निर्वाचिक सभा, है ना, जहाँ पर privately सब कोई मिल रहे हैं. The conclave of a meeting, the conclave of business tycoons is probably not beneficial for the villagers. जो वहाँ पे प्राइवेट मीटिंग हो रही थी बिजनेस टाइकून्स के बीच में, वो विलेजर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं थी. हो सकता है कि वो कुछ गलत प्लान कर रहे हो बिजनेस टाइकून्स मिलकर जो विलेजर्स के लिए अच्छा ना हो. एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज इंसिनुएशन. इंसिनुएशन इज अ नाउन व्हिच मींस an unpleasant hint or suggestion of something bad. मतलब आपको हिंट मिल रहा है या सजेशन मिल रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो आप उसको इंसिनुएशन कहते हो. Now let's understand through a sentence. The reputation of the company was ruined due to insinuation and rumors. कंपनी का रेपुटेशन खराब हो चुका था रूमर्स की वजह से और बैड सजेशंस और अनप्लीजेंट हिंट की वजह से. I hope the word is clear to everyone. Try to frame sentences from the words we have done today, and for more videos, like and subscribe to our channel. Thank you.